दोस्तों बात करेंगे आज उच्च न्यायाधीश एनवी रमन्ना के रविवार को श्रीनगर में उच्च न्यायालय के एक नए भवन परिसर की आधारशिला रखी थी। उस बात में उन्होंने जो संबोधन किया था वो भी सुनेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा था कि शांति तभी कायम होगी जब लोगों को अधिकारों की रक्षा की जाएगी। 135 करोड़ की बड़ी आबादी वाले देश की जनता को देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने शनिवार को कहा था कि शांति तभी कायम होगी जब लोगों की गरिमा और उनके अधिकारों को मान्यता दी जाएगी। The judiciary would never come in the way of governance if it is in accordance with law. We share your anxiety and concern regarding the welfare of the people. However, at the head of the judiciary, Indian judiciary, I shall attempt to present a broader picture about the judiciary as a whole and highlight the issues that are affecting the system. की रक्षा भी की जाएगी। सीजेआई ने श्रीनगर में एक नए उच्च न्यायालय भवन परिसर की आधारशिला रखने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही थी। उन्होंने यह भी कहा था कि केवल कानून ही परंपरा के निर्माण के लिए पर्याप्त नहीं है, उसके लिए उच्च आदर्श वाले लोगों द्वारा कानून के ढांचे में जान फूंकने की जरूरत होती है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने यह भी कहा था कि न्याय नहीं मिलने से अराजकता बढ़ेगी। उन्होंने कहा था कि न्यायपालिका को खतरा पैदा हो सकता है और उसे अस्थिर कर दिया जाएगा क्योंकि लोग अतिरिक्त न्यायिक तंत्र का रास्ता अपनाएंगे। शांति तभी कायम होगी जब लोगों को गरिमा और अधिकारों की पहचान की जाएगी और उनका संरक्षण भी किया जाए। The 140 crore strong population of the world's largest democracy is bound to test its judiciary. No other constitutional court in the world hears such a wide range of issues in which large number. The situation was foreseen by the first Chief Justice of India, Justice Hiralal Kanya, who had once said, I quote, "This court would be called upon to discharge its duties as perhaps no other court has so far been called upon to do so," unquote. I would like to begin with the identifying few contributing factors for docket explosion in the Indian scenario. If a Tahsildar acts upon a grievance of a farmer regarding land survey or a ration card, the farmer would not think of approaching the court. If a municipal authority or a Gram Panchayat discharges its duty properly, the citizens need not look to courts. If revenue authorities acquired land through due process of law, the courts would not be burdened by land disputes. Apparently, these cases account to 66% of pendency. It is beyond my understanding as to why interdepartmental disputes of the governments or fights between public sector undertakings and the governments end up in courts. If service laws are applied fairly in matters of seniority, pension, and so on, no employee will be compelled to go to courts. It is well known and acknowledged fact that government are the biggest litigants. According to the statistics, it is nearly 50% of the cases. If police investigates properly, fairly, if illegal arrests and custodial torture comes to an end, then no victim will have to approach the courts. Abiding by law and constitution is the key to good governance. However, this is often ignored. The opinions of law departments are not sought in the rush to implement executive decisions. Lack of people, special public prosecutors and standing counsels and the government pleaders in courts is one of the major concerns which needs urgent remedy. The decisions of the court are not implemented by governments for years together. The resultant contempt petitions are a new category of burden on the courts, which is a direct result of defiance by governments. Deliberate inaction by the governments, despite judicial pronouncements, are not good for the health of democracy. किया जाए। अपने संबोधन में सीजेआई के साहिर अली, जवाद जेदी और रिफत सरफरोज का भी हवाला दिया था। The judiciary is also confronted with the issues of the executive willingly transferring the burden of decision making to it. Although
Policy making is not our domain, but if a citizen comes to the court with a prayer to address his grievance, the courts cannot say no. मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा था कि कश्मीर के प्रशंसक कवि राजा बसु के अनुसार जम्मू कश्मीर 3 महान धर्मों हिंदू, बौद्ध और इस्लाम का संगम है। यह संगम है जो हमारी बहुलता के केंद्र में है, जिसे बनाए रखने और दोषित करने की जरूरत भी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के कामकाज के लिए यह जरूरी भी है कि लोग महसूस करें कि उनके अधिकार और उनका सम्मान की यहाँ पे रक्षा की जाती है। मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना ने कहा था, क्या विवाद का शीघ्र न्यायिक निर्णय एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है। केवल कानून किसी देश में परंपरा का निर्माण करने के लिए पर्याप्त नहीं है। आज उच्च आदर्शों से प्रेरित लोगों को कानून के ढांचे में जान फूंकने की आवश्यकता है। आम आदमी हमेशा न्यायपालिका को अपना अधिकार और स्वतंत्रता का अंतिम संरक्षक मानता है। ये विश्वास बना रहे, उसके लिए न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारी संवैधानिक व्यवस्था में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट मुख्य न्यायाधीश